So we are discussing what is the need of Lord Balaram's mercy. So for doing any activity, any work, we need bal. शक्ति चाहिए है कि नहीं? आप लोग पढ़ा लिखा करने के लिए शक्ति चाहिए. Similarly, devotional service, spiritual life में एडवांस करने के लिए भी शक्ति चाहिए. विदाउट शक्ति के नहीं हो सकता. ये बताया गया शास्त्र में. नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः. This Bala, one of the famous Swami in Bengal, he told, yes, without Bala we cannot understand Bhagavad Gita. So he took up this sloka only. And he understood to be which Bala? This Bala. He understood. To understand spiritual science, we need this muscle Bala. And that's why he once told that you first need to play football more than reading Bhagavad Gita. He commented something like that. Actually, it's not so. To understand Bhagavad Gita, you need what? Spiritual bala, spiritual potential, and that's coming from Balaram ji. And how we can access the mercy of Balaram ji, access the bal of Balaram ji, how? When we associate and serve the representative of Balaram in the material world, and who is none other than spiritual master. The spiritual master explains in different way. If somebody is teaching us Bhagavad Gita, he could be also a spiritual master, Path Pradarshak, Guru. So like this Balahinena Labhya, this Vedic initiation is without the mercy of Balaram, you cannot understand, you cannot realize your spiritual identification. Bhubaneswar, February 2, 1977. This is the lecture by Srila Prabhupada. Balaram ji makes your heart fertile. So another feature of Balaram ji, he is having plow, right? Plow is mainly used for plowing, tilling the land. So by tilling the land, what happens? जब लैंड को टिल किया है, जोता जाता है, तो क्या होता है लैंड में? उसमें जितने सारे जो कचड़े रहते हैं पहले, घास फूस लगे रहते हैं, वो उखड़ जाते हैं, राइट? जोता जाता क्यों है? उसमें कुछ फसल डालने के लिए, टू पुट सम क्रॉप. तो जितने घास और जितने भी जो खरपतवार होते हैं, हर्ब, सो वो क्या होते हैं? निकाल दिए जाते हैं. तो उसके लिए टीलिंग जरूरी है. उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहता है, एडवांस करना चाहता है कृष्ण भक्ति में, तो उसे अपने हृदय को बलराम जी के प्लो के नीचे रखना पड़ेगा. तो क्या होगा बलराम जी के प्लो के नीचे रखने से? मेरा हृदय ही फट जाएगा? नहीं, हृदय नहीं फटेगा. बलराम जी का प्लो ऐसा हृदय में जितनी गंदगियां हैं वो निकलेंगी. गंदगियां है कि नहीं? है गंदगियां. काम क्रोध रोग लोभ मोह मद अनिमात्सरी गंदगियां हैं. ये खरपतवार है, ये निकलेगा. इसलिए प्लो को देना जरूरी. कई वक्तों में प्लो देंगे ही नहीं, हम सीधे डालेंगे भक्ति लता का बीज, और भक्ति लता का बीज डालेंगे और वहीं पड़ा रहेगा बीज, और कुछ नहीं होगा. 10 साल तक भी पता चला कि बीज वहीं पे है, वो मट्टी के अंदर गया ही नहीं. देखिए नहीं, मट्टी के अंदर गया है, विनम्रता आई ही नहीं. सारा का सारा जो अनर्थ का खरपतवार है वो भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बलराम जी को अपना हृदय सौंपा ही नहीं, दिया ही नहीं. तो उसमें टिलिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, राइट? जो कर्षति संकर्षण मतलब सम्यक रूपे न कर्षति, अच्छे से जोतते हैं भगवान बलराम जी. अच्छे से जोतना मतलब क्या? You get the instructions of a spiritual master, heavy chastisements. Yeah, heavy chastisement. Hey, why you are using this? Why you are doing this? Why don't you come for this? Why don't you come for Mangalarti? Bro, I went to bed late, so why did you went to bed late? Bro, I was having this and that. And night time, what did you do? Bro, I was reading, I had assignment.
But you go and check in his life, whole night, 8 hours, maybe around maybe 2 hours he read and 6 hours he played game. Yes. So he played game. So what is that game 6 hours of game? Is that essential in his life? It is non-essential. This is a weed, because that is not able to get up early in the morning and not able to get morning life. Yes. So who will remove this weed? Huh? Balaramji. What is that? The flow of Balaramji, the chastisement of Balaram. Balaram himself won't come to tell you. Somebody of Balaram will come. Somebody will be there around. If you admit, otherwise if you run away, then gone. Finish. वो बीज लेके वो चला गया, वो सड़ जाएगा उसका, सड़ जाएगा वो, है कि नहीं? बीज सड़ जाएगा. So Karsyati means Balaram, the Adi Guru, tills the heart, land with his instructions and chastisements. Then the prema seed is sown. The seed is not sown before that. महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि सीड हम लोग सो देते हैं, पता नहीं शायद बलराम जी की कृपा अगर हो गया तो कहीं सीड नीचे चला गया तो कहीं उड़ जाए. समझ में आ रहा है? इतने सारे नॉनसेंस अटैचमेंट्स हैं हमारे. उसमें क्या ही सीड अंदर जाएगा, अरे क्या ही निकलेगा. So who is hope? Only Balaram is hope. Balaram, we should pray to Balaram that, oh Balaram, you are not able to come out from this bad habit. We do not want to get into, but still we are doing it. Why? Because Balaram's kripa has not yet taken place. The prayers are important. We could get help from devotees, Vaishnavas. They are actually expansion of Balaramji. So they can help us. Of course, not in the Vishnu feature, but they are representatives of Balaram.